वेलकम टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज़ जीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट हाउ कैन यू लीगली शॉर्टन द टेल ऑफ योर मोटरसाइकिल। नाउ बाय लीगली आई मीन आपकी बाइक के इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर्स को लगाए रखते हुए बाइक की टेल को शॉर्ट करना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे then it will be illegal and dangerous as well. Now you must be wondering why am I doing this, because the NS200 has already got a very short tail, but to be honest I just want it to be a little more shorter, so that's why I'm doing it. And we are going from this long looking tail to this sweet and short looking tail. So now technically तो ये वीडियो सिर्फ NS200 पर ही अप्लाई होती है, but don't worry guys, मैं टेल टाइडी की वीडियोस और भी बाइक्स पर अपलोड करने वाला हूँ. So make sure you hit that subscribe button and press the bell icon. So every time I upload a new video, you got notified. Now coming back to the point, to do the tail tidy, we have to remove this whole tail section. And to do so, we have to remove these two 12mm bolts. But bolts को खोलने से पहले, we have to remove the seat to disconnect the wires. So put the key inside and turn it clockwise, and then just pull out the seat. Now wires disconnect करने के लिए आपको एक flat head screwdriver को लेके wires के lock के नीचे लगा के इसको ऊपर उठाना है, and then आपको वायर को खींचना है. That's how easy it is. 2 more to go. That's the second one and that's the third one. Now we have to take out the wires through these grommets. So जहाँ तक ये कनेक्टर है वहाँ तक तो ये easily चले जाएंगे, but उसके बाद this is going to be a little tricky. Keep patience and इनको हल्का सा push करना है and then they will be out. Now once you have done with taking out these wires, then we are gonna remove the two 12mm bolts. So take your 12mm socket and just remove them. That's one and that's the other. Now hold the whole assembly, take out the bolt and take out the tail section of the motorcycle. So when you are done with taking this out, make sure you put it on some soft surface so you don't scratch your indicators, your reflectors and the illumination light as well. So now we have to take apart the complete holder which holds the number plate light, the reflector and the illumination light, and then we have to take out the indicators as well. As you can see, here are two 10mm bolts which are holding all these things, so we have to remove those two 10mm bolts and these two 14mm bolts, and इनमें zip ties भी लगी हुई हैं, so we have to cut them as well, just like that, using some kind of cutter. So yeah, now the zip ties are disconnected, so let me just quickly remove these. That's one. By the way, these are the indicators that usually KTM and RS200 and Dominar 400 shares with themselves. So NS में usually bulb type indicators आते हैं, but I have just replaced them with these LED, so they look great. और टेल टाइडी के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे. So yeah, definitely if you want to improve the overall look of your motorcycle, you can use these indicators. And please guys, do not buy cheap indicators. That's just waste of money. So this is the main part on which all the work is going to happen. So as you can see, मैंने इसको दोनों साइड से यहाँ से कट कर लिया है, and इसके पीछे का ये छोटा सा पोर्शन था, मैंने इसको भी यहाँ से कट कर लिया है. इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा. So now to hold the number plate, we will need these two clamps. ये दोनों क्लैंप मैंने एक स्ट्रेट क्लैंप को कट करके L शेप में कस्टमाइज किए हैं. स्ट्रेट क्लैंप आपको नॉर्मल किसी भी वर्कशॉप में मिल जाएगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू कट दीज टू पीसेस. इन दोनों क्लैंप्स को जहाँ पे इंडिकेटर माउंट होते हैं वहाँ पे इंडिकेटर्स और होल्डर के बीच में कुछ ऐसे लगाने हैं. सो लेट मी जस्ट क्विकली फिक्स देम. सो नाउ एज यू कैन सी, मैंने क्लैंप्स को होल्डर पे माउंट कर दिया है, बट इंडिकेटर्स के नट्स को मैंने पूरा टाइट नहीं किया, बिकॉज जब बाइक पे इसको लगाएंगे देन वी हैव टू एडजस्ट द क्लैंप्स. सो नाउ लेट्स जस्ट पुट द नंबर प्लेट. सो एज यू कैन सी कि इन क्लैंप्स में कोई फिक्स होल्स नहीं है, इससे हमें नंबर प्लेट को एडजस्ट करने की फ्रीडम तो मिलती है लेकिन प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है. तो उसके लिए नंबर प्लेट के बोल्ट्स के पीछे हम इस क्लैंप को लगाएंगे एज ए सपोर्ट, एंड देन वी विल टाइट द बोल्ट्स. And then add reflector, but before we add the reflector we will need these two washers and then put the nuts. इनको भी पूरा टाइट नहीं करना है, बिकॉज बाइक में लगाने के बाद इसको प्रॉपर्ली अलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इनको टाइट करेंगे. सो नाउ लेट्स पुट इट ऑन द बाइक एंड देन वी विल एडजस्ट इट. सो बेसिकली फिटिंग रिमूवल की अपोजिट है. यू जस्ट नीड टू पुट द two 12mm bolts back
That's one, that's two. And then just adjust your indicators and adjust the clamps that where you want your plate to go. Once you find the sweet spot, then indicators के दोनों 14 mm के bolts को tight कर दें, and then adjust the number plate and the reflector, and उसके बाद पीछे जो दो 10 mm के bolts हैं उनको tight कर दें. So let me just do this and I'll see you then. So after tightening the bolts, just slide the wires inside and then just connect them, put the seat back, and we are done. Check that shorted tail, it looks great. So that's it about the video, guys. I hope this video was helpful for you. If it was helpful, then make sure you give it a thumbs up. And अगर कोई भी suggestions है या फिर कोई topic है जो आप चाहते हैं कि मैं cover करूँ, then let me know in the comment section below. Do share the video and subscribe to the channel. I'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.